I need to understand that's what something. I read here Manuel, because we're we're trying to understand the law here, and I'm going to come back to you and take it up. मैनुअल यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर आप ऐसा कुछ है कि इटालियन के मरीन्स केस में मैं गलत हूँ तो मैनुअल बोलते हैं कि मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ. वो बोलते हैं कि हो सकता है मैंने कुछ गलत फैक्ट्स कोट किए. खैर ये तो बात इन्होंने मानी, लेकिन अभी जिस तरीके से ये ग्रेव केस हुआ है, आखिर अबू सलेम के पीछे कौन है? मतलब अबू सलेम के ऊपर हमला कराने के पीछे कौन है? क्या वजह हो सकती है कि अबू सलेम के ऊपर इतने हमले हो रहे हैं? आइए देखते हैं हमारी इस रिपोर्ट में. मुंबई के तालोजा जेल में बंद अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलीम पर गोली चली तो जेल के अंदर, लेकिन ट्रिगर दबाने का इशारा हुआ सरहद पार से. जी हां, ये खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि खुद उस शूटर ने किया है जिसने सलीम पर गोली चलाई थी. लेकिन बड़ा सवाल ये कि जब कानून का फैसला अगर जेल के भीतर होने लगे तो फिर होगा क्या? अबू सलीम 1993 बम धमाकों का आरोपी है. पुर्तगाल से प्रत्यर्पण संधि के तहत सलीम को भारत लाया गया है. 2005 में पुर्तगाल ने इस शर्त पर अबू सलीम को भारत को सौंपा था कि वो उसके गुनाहों के लिए उसे मौत की सजा नहीं देगा. प्रत्यर्पण की एक शर्त ये भी थी कि अबू सलीम को सुरक्षा दी जाएगी. लेकिन सलीम पर हमले के बाद प्रत्यर्पण संधि की शर्तों का उल्लंघन हुआ है, ऐसा अबू सलीम के वकील मानते हैं. और अब सलीम को पुर्तगाल वापसी की अपील हो सकती है. सलीम को 2002 में पुर्तगाल से पकड़ा गया था. भारत ने पुर्तगाल को अबू सलीम के अपराधों की जो सूची सौंपी थी, उसके मुताबिक 1993 के बम विस्फोटों सहित उस पर कुल 8 मामले चलाए जाने थे. सलीम पर फर्जी पासपोर्ट, हत्या, बम विस्फोट और वसूली सहित कई मामले दर्ज थे. सलीम के प्रत्यर्पण के समय भारत सरकार ने पुर्तगाल को आश्वासन दिया था कि उसे उसके किसी भी जुर्म के बदले मौत की सजा नहीं दी जाएगी और न ही ऐसे कानून के तहत सजा सुनाई जाएगी जिसमें 25 साल से ज्यादा की सजा का प्रावधान हो. प्रत्यर्पण के शर्तों के मुताबिक सलीम के खिलाफ दर्ज मामलों में से सिर्फ 3 मुकदमे ही चल सकते हैं. लेकिन दिल्ली पुलिस ने फिर भी सलीम पर मकोका लगाया था. सलीम के वकील ये भी मानते हैं कि ये भी पुर्तगाल से हुई प्रत्यर्पण संधि का उल्लंघन है. ऐसे कई उदाहरण हैं जो सलीम को फायदा पहुंचा सकते हैं. ऐसे में ये सवाल फिर से उठ रहा है, कानून का फैसला अगर जेल के अंदर होने लगेगा तो फिर क्या होगा? कानून के जानकार मानते हैं कि इससे सलीम जैसे प्रत्यर्पण कैदियों को फायदा पहुंच सकता है. ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज एक्सप्रेस. मैनुअल इस वक्त हमारे साथ हैं, अबू सलीम के जो वकील हैं, एक्सक्लूसिव न्यूज एक्सप्रेस पर, जो कि पोर्चुगल से आए हैं और अभी बॉम्बे स्टूडियो में हैं. मैनुअल से मैं ये जानना चाहता हूं कि ऐसी क्या वजह है कि पोर्चुगल को ये लगता है कि हमने डिपोर्टेशन के जो रूल्स हैं उनका वायलेशन किया है. मैनुअल, व्हाट आर द रीजंस, व्हाई डू यू बिलीव दैट इंडिया हैज गॉन अगेंस्ट द एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी? वन, एंड माय सेकंड क्वेश्चन हियर इज, there are the Supreme Court of Portugal has said that there has been an instance where the deportation rules have been violated. No. Let me explain for you not to have any confusion. Abu Salem wins in the 3 courts. There are 3 decisions in Portugal: the High Court, the Supreme Court, and the Constitutional Court. And they say that Abu Salem has sent to India with some warranties that have not been respected. But at this moment, the court cannot do anything else because the extradition case is over. So if it is over, the guy must return to Portugal. That's my. But as they finish the process of extradition, at this moment they only can speak about the government, and obviously the government of India, I think, make some proposals to Portugal not to send the guy to Portugal. Obvious. I think that's what is happening at this moment. I understand what you're saying. यहाँ पर उनके वकील ये कह रहे हैं. But let me explain you another thing. For you to understand, we are dealing with a life from a person, and obvious in this case,
we must pay very attention. And sometimes I don't understand very well the way of thinking about India, because India is an example, for me it's an example of living the two much different cultures. Okay, for me it's an example, but I don't understand how they don't agree or they don't respect the decision from other courts, in this case Portugal. So I'm confused. यानी कि अभी That's ये why बोल I रहे need हैं, to come Manuel हमारे to साथ ये बोल sometimes रहे to हैं, India it to is- understand how the Indian people. Manuel, we need to understand one more thing. It is not just about respecting the decisions of your court, where X person, and here the X person in question is Abu Salem, may have done a lot of good in your country, but in this country is responsible for an absolute carnage or whatever has happened in 1993. A, murder of Gulshan Kumar. B, C, secretary of Manisha Koirala was being murdered. And 3, he has been again one of the accused in the cases of being attempt to murder or trying to kill Rajiv Rai and Rakesh Roshan. So we cannot expect Yes. to give respect to Yes, someone like yes, that. But as far as rules of the countries are concerned, I'm going to come back to you on that. I'm just going to come back to you on that just after a short break. यहाँ पे मैनुअल ने एक सवाल खड़ा किया और उसका जवाब देना बड़ा मेरे लिए ज़रूरी हो जाता है कि मैं समझ नहीं पाता कि भारत की जो कल्चर है, भारत की जो अदालतें हैं, वो विदेश की अदालतों का क्यों नहीं यहाँ पर सम्मान करती हैं। जिस व्यक्ति का सवाल हो रहा है वो विदेश में जाके भले ही कितनी सफ़ेद शर्ट पहन ले, लेकिन यहाँ पर जब आता है तो उसकी सफ़ेद शर्ट के अंदर जो उसने पहन रखा है उसमें सिर्फ लाल खून के धब्बे हैं, ये साफ होता है। तो इस वक्त हमारे साथ है मैनुअल लुई फरेरा, जो कि पोर्चुगल से वकील हैं, अबू सलेम के, वो इस वक्त हमारे साथ है। मैनुअल, द बिग क्वेश्चन इज नाउ, व्हाट इज गोइंग टू बी योर नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन vis-a-vis Abu Salem and the kind of threats he's faced in this country? Let me respond to your last question. I don't want to disrespect the state of India, any member of the government. I only speak for myself, and obviously here I don't speak for my country, and I'm giving my opinion from the things what I saw. But responding to that that question that you put me about the crimes that they are input to Abu Salem, if you decide that every guys that are involved in murders should be dead, let's go put that in India and start killing the people. But when you do that, you cannot make agreements of extradition with other countries. Portugal has been the first country all over the world that abolished the death penalty. And for that reason, when Abu Salem returns to India, Portugal say some conditions. Death penalty must go, cannot be applied. Maximum of the penalty, 25 years. And he cannot be condemned for other crimes that are not in the extradition. What I see, my client has been for 10 years. My client is responding for extra cases outside the extradition. And my client has been victim for 2 times in a high security jail of attempt of assassination. If this is not, I do not know how you say in Indian these things. How can you say? I let you thinking. I quite understand what you're saying, and I would like to explain this to our Indian viewers in Hindi. यहाँ पे मैनुअल का ये कहना है कि मैं भारत की सरकार की और भारत के लोगों की इज्जत करता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, अबू सलेम के ऊपर एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी में जो केस लगाए गए थे, उसके ऊपर से और जो केस लगाए गए वो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी का वायलेशन है, ये नहीं होना चाहिए था। और दूसरी चीज़, अगर उसके ऊपर जेल के अंदर हमले हो रहे हैं तो ये भी नहीं होना चाहिए था। Manuel, before I wind up my show, I want to ask you something. Now, you're looking at Abu Salem and the entire case with the glasses of a lawyer, and he's your client. Now, I am trying to bring you to that level of consciousness where we talk about someone who's been responsible, though the cases are pending, they're going on in the courts. How do you look at a person who's responsible for so many murders, so many criminal acts, and so many acts of conspiracy? And right now, I would like you to just disassociate yourself from the jacket of a lawyer. No, I think that every person have the right to be defended by an attorney.
and until he been condemned, he will be innocence. So for me, Abu Salem, until he responds in all the decisions, and I respect all the decisions from the Court of India, for me he is innocent. Okay, but we cannot think like that, because You've still not thinking like removed that, your we start jacket of killing all the lawyer. people. You've still not removed your jacket of an attorney. But anyway, thank you very much for joining us here in News Express. We appreciate your time. For me, my client's life is most important thing. Yeah, I understand that though you've come here on a visa which is a tourist visa, but I'm sure that you're going to see a lot of sights, not just handling the coats of your, handling the jacket of your attorney. But thank you very much for coming here and joining us. और शाहिद काबिल तारीफ है आपका ये अटेम्प्ट, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शाहिद अंसारी, जिन्होंने ये वकील साहब को यहाँ तक लेकर आए। लेकिन अभी एक चीज़ जो है वो ये है कि अबू सलेम के वकील ने ये कहा है, और बल्कि उन्होंने साफ कह दिया है कि भाई उनकी जो जैकेट है, जो उनका जो पहनावा है अटर्नी का, उससे तो वो हटने वाले नहीं है। लेकिन ये उन्होंने ज़रूर साफ कर दिया है कि उनकी नज़र में अबू सलेम इनोसेंट है और वो उसको डिफेंड करते रहेंगे। कानून का दायरा और हिंदुस्तान की नज़र में वो क्या है, ये हम सब जानते हैं। ज़रा सोचिए उस परिवार के बारे में जिसने उस धमाके में अपने कितनों को खो दिया। ज़रा सोचिए उन लोगों के बारे में जिन्होंने अपने घर का इकलौता चिराग खो दिया। वो लोग क्या सोचते हैं, उसके बारे में भी सोचना ज़रूरी है, लेकिन ये कानून तय करेगा। हमारे इस खास शो में फिलहाल इतना है।